Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 7, the role of government and citizens, and today I will deliver its third lecture. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me that what kind of issues do people face in their areas. So the key problems in the local area are shortage of drinking water, pollution, lack of health facilities, lack of educational facilities, and poor sewerage system. So these are the problems that we face in the local areas of Pakistan. Okay, my dear students, in today's lecture, the students will be able to recognize that citizens organize themselves to meet their needs. So let's start the lecture with the Islamic perspective. So Allah says in Quran that, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you people and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. So my dear students, Allah ताला ने हमें ट्राइब्स की और कम्युनिटीज़ की शक्ल में पैदा किया है ताकि हम एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें, एक दूसरे का जो है वो एहसास कर सकें, एक दूसरे की बेटरमेंट के लिए काम कर सकें. So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly answer the question, who are citizens? Citizens are the residents of a country. Very good. Okay, my dear students, I request you all to please open page number 58 in your GK3 books. I hope everybody has opened the book. So let's start the reading. Put your fingers where I will read. Citizen. A resident of a country is called a citizen. Every citizen in a society needs to organize himself to meet his needs. Every month, people can arrange a cleanliness campaign. They can use water purposefully so that it cannot get wasted. They can turn off on street lamps only at night and turn them off in the daytime. If any of the person is literate, he can teach others who cannot afford school. Such small steps can bring a big change in our society. So my dear students, अगर हम organize होंगे, अगर हम मिलकर काम करेंगे, अगर हम चीज़ों को बचा कर रखेंगे, तो हम हर चीज़ से, हर रिसोर्स से मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. जैसे कि पानी है, अगर आपके पास पानी आपको डेली बेसिस पे मिलता है, तो आपको चाहिए कि आप उस पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि जिन लोगों को नहीं मिलता उनकी भी नीड्स को पूरा किया जा सके. इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करें. इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई आपको आती है, अगर आपके पास एजुकेशन है, तो आपको चाहिए कि आप उसको दूसरों तक पहुंचाएं. इसी तरह अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें अबाउट क्लीनलीनेस ताकि आपकी सोसाइटीज़ जो है वो क्लीन रहें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, है यू कैन सी दैट व्हाई सिटीजन्स नीड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स. सिटीजन्स को अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहिए? सिटीजन्स को अपने आप को ऑर्गेनाइज इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी एग्जाम्पल आप इस चीज़ से ले सकते हैं कि अगर जो एक स्टूडेंट जो है वो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेगा तो देयर विल बी लेस क्लटर. चीज़ों का फैलाव कम हो जाएगा और वो अपनी हर चीज़ से जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकता है. इसके बरक्स अगर आप चीज़ों को फैलाएंगे और ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप चीज़ों को तलाश करते रह जाएंगे, आप चीज़ों से बेनिफिट हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि कोई भी उनसे बेनिफिट हासिल नहीं कर सकेगा. सो इसी तरीके से अगर सिटीजन जो है वो ऑर्गेनाइज होंगे कि वो पानी का एहतियात से इस्तेमाल करें, बिजली को बंद कर दें और कहीं बाहर जाएं तो क्यू जो है यानी कि लाइन बनाकर जो है वो काम करें, तो इस तरीके से क्लटर भी कम होगा, मैस कम होगा, आप चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, हर किसी की नीड जो है वो पूरी होगी और आप इस तरीके से ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगे और एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर सकेंगे और अपनी भी नीड्स को पूरा कर सकेंगे. सो व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज्ड यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम एवरीथिंग and you can fulfill your needs more easily. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your class and let's start the worksheet. Who is a citizen? The resident of a country is called the citizen. How citizens can organize to meet their needs? They must use the water carefully, do awareness programs, switch off the electricity, educate people. So this is how they can organize themselves to meet each other's needs. So now is the time for fill in the blanks. So here's the word bank. So in many cities of Pakistan, water is supplied to only 50% of the population. People throw garbage on roads that get stuck into the
Sewage pipes. A person cannot grow alone. Dash has become swear issue in almost all areas of Pakistan, that is pollution. So quickly complete this worksheet and we will move forward. I hope all of you have finished it. Now let's move forward. So my dear students, now is the time for evaluation. So quickly answer question number 8 and 9 orally. Zabani answer kare. Who is a citizen? A resident of a country is known as its citizen. You are a citizen of which country? Pakistan. Very good. Okay, my dear students, now is the time for homework. So for homework, discuss with your parents that how can we organize ourselves as the citizens of Pakistan. क्योंकि अब आपको पता है कि कैसे हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप इसको डिस्कस करें अपने पेरेंट्स के साथ, उनको भी डिफरेंट तरीके बताएं ताकि जो है हर कोई मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हासिल कर सके. So my dear students, today we have learned that a resident of a country is called its citizen. Every citizen in a society needs to organize himself to meet his needs. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.